लगाम हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के गढ़वाल में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस और टीआरएस पर बोला हमला, कहा केसीआर ने युवाओं और पिछड़े वर्ग के साथ किया धोखा। राजस्थान के रण में सभी दलों का प्रचार हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के पिपाड़ सिटी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार, लूट और घोटाला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। 75 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति को किया जा रहा है प्रदर्शित। क्रिकेट विश्व कप 2023 के अंतिम रण को लेकर उत्साह चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए कल जाएंगे अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वायुसेना का सूर्य किरण दिखाएगा करतब। भारत ऑस्ट्रेलिया में 20 साल बाद होगी खिताबी जंग। आज बद्रीधाम के कपाट बंद होने के साथ ही होगा इस वर्ष की चारधाम यात्रा का समापन। दोपहर 3:33 पर 6 महीने के लिए बंद होंगे कपाट। शीतकाल में जोशीमठ में विराजमान होंगे भगवान बद्री विशाल। और देश भर में मनाया जा रहा है आस्था और श्रद्धा का लोक पर्व छठ। दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जगह जगह सजाए जा रहे हैं घाट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के भरतपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सम्मान की रक्षा भी कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही है, ये शर्म की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता कांग्रेस को प्रदेश के कोने कोने से साफ कर देगी। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण की राजनीति इतनी सर्वोपरि है कि वो लोगों की जान से भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आती। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया है। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है,
क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? पीएम ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वाले मोदी को सिर्फ इसलिए गालियां देते हैं कि मैं प्रदेश में कई लॉकर खुलवा रहा हूं। ये ऐसे लॉकर हैं जहां जनता से लूटी गई गाढ़ी कमाई बंद है। राजस्थान कांग्रेस के लोगों को पूछोगे कि भाई क्या है, वो कहते हैं यार बाकी कुछ भी हो, बस लॉकर न खुल जाए। बाकियों को लग दिखता है, इनको लॉकर दिखता है। इनकी नींद हराम हो गई है कि मोदी लॉकर खोल रहा है और लॉकर में से सोना निकल रहा है, सोना। और कोई ये गलती मत करना कि आलू से बना हुआ सोना है। ये आपसे लूटा हुआ, चोरी किया हुआ माल से निकाला हुआ असली सोना है। ये काला धन, ये सोने के भंडार जो लॉकर से निकल रहे हैं, ये राजस्थान के नौजवानों को धोखा दे करके लूटे गए हैं। ये पेपर लीक घोटाले का पैसा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के जोगलंबा में एक रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान गृह मंत्री ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। तेलंगाना में 52% ओबीसी है, 135 बैकवर्ड कास्ट की जातियां है, मगर मुख्यमंत्री नहीं दिया। हम वादा करते हैं आप कमल फूल की सरकार बनाओ, हमारा मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। इन्होंने बैकवर्ड कास्ट को टिकट देने में भी अन्याय किया। कांग्रेस पार्टी ने भी बैकवर्ड क्लास को टिकट देने में अन्याय किया। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा टिकट बैकवर्ड क्लास को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि अब केसीआर के वीआरएस लेने का समय आ गया है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार का विकास चाहिए या केसीआर के झूठे वादे चाहिए, ये तय करना है। विशेष कर युवा मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अब बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है, रिटायर्ड करने का टाइम आ गया है। क्योंकि ये केसीआर की सरकार और चंद्रशेखर राव खुद झूठे वादे करने में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां प्रेस वार्ता आयोजित हो रही है। खुले छूट है आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब भ्रष्टाचारियों को दे रखी है कि आकाश से पाताल तक जहां जो लूट मचानी है वो लूट मचा लो। और वो नतीजा सामने आया है कि दिल्ली की जनता को लगातार जो है धोखा दिया जा रहा है और सब लोग यही कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे अल्लाह, फिर एक नया घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का पकड़ा है। और इस घोटाले में इस बार जल बोर्ड की डिटेल सामने आई है। आप सब जानते हैं कि इतने लंबे समय से जब जल बोर्ड को देखभाल की जा रही थी, देखा जा रहा था, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, मीटर्स बढ़ गए और खपत बढ़ गई, लेकिन जो कमाई है वो कम हो गई। और जो पहले उनके एफडीआर वगैरह रखे थे वो भी गायब हो गए। तो पैसा गया कहाँ? तो इस तरीके की तमाम चीजें, मैं कुछ चीजें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो ये टैंकर माफिया बताकर ही सरकार में आए थे। और हम सबको याद है वो टैंकर माफिया, और वो टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है, क्योंकि हर गली में जहां पर इन्होंने पानी की पाइप नहीं बिछाई है वहां पर टैंकर 10,000 रुपया लेता है गली से, टैंकर से पानी लाने का।
और ऐसी तमाम गलियां अपने क्षेत्र की अगर मैं गिनवाऊं तो पटेल नगर भरा हुआ है, अन्य क्षेत्र बड़े हुए हैं, और जहां पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा गली में इकट्ठा करके टैंकर माफिया को दिया जाता है। तो टैंकर माफिया की जो शक्ति है वो कम नहीं होकर बढ़ी है, और इसमें 35% जो है वो अधिक उनको पैसा देना पड़ा, क्योंकि इलीगल पेमेंट जो टैंकर्स को दी गई और उसका है, इस वजह से जो ओवरशूटिंग ऑफ दी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ गई और 35% जो है वो अधिक हो गई कॉन्ट्रैक्टर्स के हक में। 12,000 करोड़, अब इस संख्या को प्लीज आप लिख लीजिए, 12,000 करोड़ रुपए के जो है काम अवार्ड किए गए, लेकिन उन सारे कामों की जो कॉस्ट है, जैसा कि आपको याद अगर हो, शीश महल घोटाला याद है आपको, सब चीज तो 10 करोड़ से नीचे का बिल रखो। इसी प्रकार से इसमें अधिक से अधिक जो कॉस्टिंग है 5 लाख से कम करी है, ताकि आपको टेंडर ना करना पड़े। और वो 12,000 करोड़ के 12,000 वर्क ऑर्डर है, 600 करोड़ के काम है। 12,000 वर्क ऑर्डर्स दिए गए, 600 करोड़ के काम दिए गए, और वो काम में टेंडरिंग प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हर चीज 5 लाख से कम के उसमें रखी गई अधिकतर चीजें। 1,601 करोड़ रुपए का जो फंड है वो किताबों में अनस्पेंड दिखाया गया, और वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। 1,601 करोड़ रुपया किताबों से गायब हो गया। 135 करोड़ रुपए जो है वो कहीं पर रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे, कहीं पर पता नहीं चल रहा, जो टर्म डिपॉजिट होता है। इसी तरीके से 1,167 करोड़ रुपया जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डीजेबी का और जो कंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक्स का है, उनके बीच में जो अंतर है वो 1,167 करोड़ रुपए का है। सोचिए। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं गोवा, जहां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जो प्रेस वार्ता है वो शुरू हो चुकी है। DGPIB Ms. Mukherjee would enumerate about the media coverage aspects, and finally the address of Vice Chairperson ESG. And after her address, we will take few questions. I would also like to inform you all that this press conference is being telecast live on YouTube channels of PIB India, DD News and DD National. Over to you, Shri Pritu. So very good afternoon to all of you from Goa, and I would like to tell you that this 54th edition is very close to start. We will just begin with something reflecting back on something which happened in 1952 when we had the first edition of IFI. So can I have the slide please? Yeah. So it was the reflection from Mr. Satyajit Ray, our eminent filmmaker who was internationally popular. He said that if the quality of films were the sole criterion, surely one of the best film festivals ever held anywhere was the first International Film Festival of India. And few festivals before or since have produced such a outstanding feast of films. So that is the tradition which we are carrying forward in this 54th edition also. And the core of organizing this film festival has always been the selection of films. Can I have the next slide please? So this, of course, we have already talked about it. We will talk to you about the kind of selections which we have done for the films. Let's begin with first how it all began. This 54th IFI, we launched the poster at Cannes, and Honorable Minister of State was Shri L. Murugan was there. He launched the poster, and then we also launched a promo for International Film Festival in front of the international audience, and it was very, very appreciated to the extent that Shri Michael Douglas, who is the internationally acclaimed actor and director, he was the one who came to the India Pavilion for this purpose, and of course all the celebrities there, they endorsed it. In this, I would also like to tell you that this peacock design this year has been done in collaboration with the National Institute of Design, Ahmedabad. So it's a very, very vivacious design which has been done, encompassing not just various colors but also showcasing, if you look into the details of the feathers, it also showcases various films, various Indian scripts, various Indian textiles. So all of these things are highlighted in this. There is a design concept note which is available on the website if you want to dwell with it. So that is how it all began. And next.
So as I was talking about, the core of the film festival, which is in essence internationally, is the selection of films which we do for the film festival. We are happy to say again that this time we received more than 3 times of the entries for the film festival, and the kind of curations we have done in the international section which we have, in which we showcase the international films. There has been 1.5 times rise from the last year. Last year I think we had below 70 films. This year we have more than 100 films in international cinema. Apart from that, the festival kaleidoscope, which are the best films of all the year round which have played at festivals. Like from Cannes, we have more than 5 films which won at Cannes. We have about 5 films from TIFF, Toronto International Film Festival, the Busan International Film Festival, the San Sebastian, Sundance. So all the important festivals across the world, their films have been taken into this festival kaleidoscope, which is one of the most watched sections in the IFFI also. And let me also take this opportunity to tell you that our IFFI is one of the 14 biggest film festivals internationally, of which one of them is Cannes, Berlinale, and all such festivals are there as part of this thing. So our festival, this international festival, is only one in South Asia to be recognized by FIAF out of these 14 festivals, and only 4 in the whole of Asia. Next please. So this is the international jury. We have already made the announcements. Shekhar Kapoor is the head, and we have very, very eminent jury members from all across the world. Next. So opening film and the mid-fest film and the closing film, the announcement was already made on the 12th when we did the press conference. But let me tell you, this mid-fest film, one should look forward to seeing it, because it was also a winner of Best Actress Award in Cannes, and I hope that the cast is also coming along with the director and the producer. We are trying for that, and this will be the India premiere for the film. The rest of the both films will be the Asia premieres. And in total, out of the 198 international films which we are showcasing, we have about 13 world premieres, 18 international premieres, 62 Asia premieres, and 89 India premieres. So there's this difference between the world premieres, is that the world premieres is the first time anywhere in this world these films are being showcased. So there are 13 of the films which will be first time shown in this film festival. International films means international premieres, which are 18. That means only in that country it has been showcased. Anywhere outside that country, it will be the first time they are being showcased in IFFI. So that is the kind of lineup which is there, which is a remarkable improvement. Next. So this we have briefly already talked about. Two more important things which we sort of want to get it across is that there is one documentage section to mark 2 things. India's Oscar entry, and the winner of Oscars was a documentary film for which the Oscar was awarded to them, The Elephant Whisperers. And also that documentary is gaining much more importance across the world, across the film festivals, and most of the important film festivals are adopting documentary films as part of their showcasing. So IFFI also this year we have done the addition for Best of the World documentary films into this section. There is one restored classic section. Can we go to the next slide, please? Yeah, so there is one restored classic section in which there are 3 international classics, out of which I think one is India premiere, rest 2 are Asia or world premieres. And apart from that, there are 7 special restored classics which will be showcased to the world for the first time, which has been done by the Indian government under the National Film Heritage Mission. And the quality of the restoration will remarkably change everybody's appreciation for these films. And when the film, these were the old films dating from 1937 onwards to 1950s and 1970s, and they were shot in that 36mm or 16mm format in those celluloid reels. They had got damaged, so not just the scanning was done, but every frame was restored to present the cinematic beauty of that film. So
that's something I think which everybody will look forward to. Next. This festival we have curated specially 4 films for Accessible India and Accessible Film Festival. So the 2 of them will be showcased. They are important films which are, out of which I think some of them are also National Film Award winners. They will be showcased for the audience who are hard of hearing. So they will carry not just subtitles, they will also carry a sign language picture-in-picture in the frame. So that has been specially done for this film festival. And then 2 more films will be there where there will be closed captioning, there will also be voice descriptions for the people who are not able to see. So it will be made accessible. Apart from that, I think my colleague Ankita will tell you about how the place, all the venues of the film festival have been made completely accessible. And next. This year we had instituted this OTT award. We have already in the last stages of shortlisting, the jury is doing it. And we hopefully will be announcing the OTT award also in the closing ceremony. Master classes and in conversation sessions, these have been really curated keeping 2 things in mind. That A, the subjects which are very, very pertinent in today's world of cinema, they have been chosen. And the people who are most pertinent, they have been chosen to do that kind of a master class or in conversation, so that the cinephiles and the film students and of course the people who are passionate about films can know the best about that topic. We will just showcase you 2 of the master classes. We have done some show reel video of that. Just have a look at that. So incidentally, this is a masterclass by Michael Douglas, who has also been awarded the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award, and he's going to be in Goa from 27 to 29 for this festival and receiving this award and also participating in the festival, along with his wife and companion, Miss Catherine Zeta-Jones, who's also a very, very popular actress. Yeah, please. There are some technical limitations, but I'm sure these videos are getting released onto the social media, onto the internet, and of course you'll get to see more of it when people attend the masterclass sessions. I would also take this opportunity to announce that some of the masterclass sessions we have already opened them for booking. So there are limited seats, and the venue this time is the resurrected and rejuvenated and redone Kala Academy venue, which is one of the most prestigious venues of this International Film Festival. So it will be part of that. The master classes will be held in that. So I would request everyone to start booking their tickets, the people who have already registered for the delegates. Next. There are 12 gala premieres. This was started last year, that when we started to integrate the mainstream cinema, the popular cinema, along with the festival cinema.
and gala premieres require that the cast who are very popular, they will also be attending. So there is Salman Khan attending, there is Sunny Deol attending, so there are so many people. I'm sure that Goa will be in for a lot of adrenaline rush where people will enjoy to be a part of this film festival. So there's 10 gala premieres of feature films and 2 also of OTTs. Next. You want to show that? Okay. Thank you, IFI, for the world premiere of After Padre. Thank you, IFI, for the world premiere of After Padre in Goa on the 21st of November. I, along with Padre's very talented team, will see you at the gala premiere of the 54th International Film Festival of India. Register now. Arrangement karak, security karak. Arrangement karak, security karak, programming karak, red carpet भी karak. नमस्ते, मैं पंकज हूँ और 54 इफी गोवा में आ रहा हूँ मैं 22 नवंबर को हमारी फिल्म कड़क सीन के साथ. तो मिलते हैं वहीं, मिस्ट्री सुलझाते हैं. So similarly, we've also released these over the social media, and you can find more of them. And everybody is endorsing FE, and also they are very, very willing to come over here. The next. This is the knowledge series. I wanted to talk about it especially because this is not just part of IFI but also part of a specific section called Film Bazaar, which happens along the side of IFI. And that is basically for filmmakers, for the whole ecosystem, which from internationally we have film festival directors, we have marketing agents, we have sales agents who attend this section. And in this also, like the master classes which are for general IFI delegates, it's also meant for the filmmakers so that they know the nuances and the current topics which are of importance in filmmaking and film production and film releases. So that will be covered, and a lot of celebrities are endorsing that also. I think Nawazuddin Siddiqui, Aditi Rao Hayadri, and a lot of other people are also coming in various sessions of pertinent discussion for the film enthusiasts and filmmakers. Next. Creative Minds of Tomorrow. This is an initiative which was started with the vision of our Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur. And this will be the 3rd edition for it, and this time we feel that we have completed the circle. Last year the new thing which was introduced was having these 75 creative minds to be divided into 5 teams and having a team competition for making short films. So there were 5 short films made and one of them was awarded also. This year, apart from just the short film making competition, which is done in association with an international shorts TV, which is of international repute. And apart from that, we have also introduced 2 days of master classes in which Berlinale Film Festival is participating, in which they are taking a master class, and other important masters are also taking their master classes for 2 days. After that, after the competition is finished, we are also having these people to stay back, these creative minds, and visit the film festival. They also experience the film bazaar, and eventually 1 day of talent hunt recruitment is also being organized, in which 15 important and internationally acclaimed production companies have already given their consent, and they'll be participating. They are reviewing their resumes, and they'll be doing 1-to-1 recruitments here at the Creative Minds of Tomorrow hangar. Next. Film Bazaar, we'd already discussed. This is the 17th edition of Film Bazaar, which is held alongside with the IFI. And this edition, we have again reinforced 2 things. The importance of documentaries I had already discussed, and so all of these sections, important sections like screenwriting, like co-production, like the work in progress lab, they will all have documentary sections also included in along with the feature films. Then there is also one important component of visual effects. So as we talk today, our films which are getting made across the world, they have more and more content which is done with the help of visual effects and not just shooting. So that importance, we have created a visual effects
pavilion, which will be a treat for people and filmmakers to come and watch, because what all can be done with the help of visual effects if it is made to explore to the filmmaker, I think he will be able to make a bigger and a better content to the scale. So that is why we have introduced this year. And important players like Amazon Prime, Netflix, Sony, all of these important people are putting up their stall as to showcase how visual effects can augment the film several times. So that is going to be an important addition this year. So I think we'll not talk in detail of the Film Bazaar. This is a very specific, but I'll just let you know that every segment has been curated, and Film Bazaar per se, the USP is we have film markets all over internationally along with most of the good international film festivals. But the beauty of our Film Bazaar, which India organizes, is that this contains curated projects. We talk about 20 co-production projects. They are curated out of hundreds of projects which we receive entries from across the world, and we select the best of 20. So likewise, in all the sections, we curate about 250 film projects in which people can partner, in which filmmakers can come and invest. The marketing and distribution rights can be taken. So it becomes a very important hub and ecosystem for people to come and interact and be part of that filmmaking community. And I'm sure that this also puts India's filmmakers who are attending the Film Bazaar onto a global pedestal, expose them to what is happening globally, because we have filmmakers from internationally coming over there. Even this year, there are 5 countries which are putting their stalls, 4 countries they are putting their stalls here. In fact, one of the countries is putting 9 stalls. So we are happy that not just Indian states, 10 Indian states are putting up their stalls to showcase their filming locations, but there are countries coming forward in our Film Bazaar to showcase their country, their film shooting locations, their incentives. So this is one very important thing in change, as to say, in the theme of the IFFI. This year, the entire festival branding, the entire social media, the entire cataloging, I'm sure that maybe tomorrow when you are taking your badges, we'll be able to give you the catalogs along with it. And everything has been sort of synchronized, and it is built around the designs of the peacock, which is the mascot of IFFI. And all the designs have been specifically done by National Institute of Design, Ahmedabad. With their collaboration it has been done. So you will find the entire look of the city, look of the venues, look of the graphics. All of them will be different and also synchronized at the same time. So this is one change you're going to see in Goa this year. Thank you so much. This is all from my side. I think I'll hand over to my colleague Ankita for briefing you about the arrangements, how they're going in Goa. Thank you, sir. I think sir has pretty much briefed you all about every aspect of IFFI as far as the programming and other stuffs are concerned. So ESG continued to provide the requisite support infrastructure that is needed for the successful execution of IFFI. So I'll just limit myself to the new additions this year. Rest of the things remain the same. So in terms of technological upgradation, the Macanese Hall has been upgraded in the sense that we now have new projectors, and hence you will have a better screening experience there. Other than that, the mobile app has also been updated. So now you can give your feedbacks, and there is a personal, you can also maintain a personal diary for your personal itinerary and stuff. So, and it is now more in sync with the website. So that has been done. And now there will be free Wi-Fi service for the delegates to enjoy, and it will be complimentary at all the festival venues. And as Sir had also highlighted their efforts to make the festival more inclusive and more accessible. So in sync with that, all our venues are accessible and specially able friendly. So other than this, specially able delegates will be able to benefit from the wheelchair accessible auto rickshaws and step wheelchairs which are available at the festival venues. In terms of commuter services, I would wanted to highlight that IFFI delegates can avail free transport
between festival venues via Kadamba buses and auto rickshaws, and routes which will include the Inox Panjim, Inox Polvorim, Kala Academy, Samrat, Ashok, which have been added this year. These 2 screens have been added this year. Hotel Marriott, Miramar, and then the rest which I have mentioned at no cost. A very important component which has been added this year is the IFFI Cinemela. So earlier we used to have something called the IFFI Mile. It has been rechristened as the IFFI Cinemela, and now instead of having it on this side of the Mandavi, right adjacent to the road, we are now having it on the main promenade. So one can experience a great cinemela on that side, and we have various stalls which are showcasing India's cinematic history, and we have various pavilions like the National Museum of Indian Cinema, National Film Archives of India. So CBC is also doing their own setup, and additionally visitors can also indulge in multi-cuisine restaurants and handicraft products. This year also, to support the local SFG groups, we have their stalls as well. So we request the public to please come and enjoy the Cinemela experience from 21st November to 28th November. Because as I would also like to emphasize the fact that IFFI is not just for the delegates. When it comes to Goans, it's also for the local Goan, the tourists who are coming there, and so to make them a part of IFFI, this Cinemela experience is being provided to them. When it comes to logistics and parking, we are in close coordination with the local police and the traffic police. For the opening ceremony, like every year, we have the VIP parking inside, and there is another parking near the water tank. And for the rest of the festival venues, we have DB ground as the main parking area. Traffic advisories will be issued from time to time from the traffic police, so kindly go through it. And in addition to this, I also wanted to highlight the Goan section. Like every year, we have Goan section this year also. We had around 20 entries, out of which 7 selections were made, 2 of which were feature films and 5 non-feature films. So if I were to name them, so it is Gathan, Peace Lily Sand Castle, The Witness, Yashoda, Marwat, #emoji, and Crazy Mode. So I congratulate all of them for the same. And if we move to the registrations this year, then till now we have around 6,452 delegate registrations. The registrations will be open till the end of the festival. So anybody who has still not registered and want to be a part of IFFI can go and register themselves. Regarding the booking, it's available through the app as well as the website. And I think more or less everything is covered. Just wanted to reiterate a few points with respect to ticketing. So delegates can book their tickets only through online mode by logging into their profile, either through the website or through the app. So if you have a badge, the delegate ID, it doesn't mean that you can just walk into and watch your movie. So you need to book your tickets well in advance. Second, the IFFI Goa app is available both on iOS as well as Android. Third, tickets can be booked only 2 days prior to the screening. So please book it in advance. It can be booked only 2 days prior to the screening. I think just one more point that I wanted to highlight with respect to the opening ceremony. That was, I really wanted to request everyone to kindly be seated 30 minutes prior to the commencement of the ceremony because of security reasons. So just wanted to take this medium to brief everyone regarding that. And open air screening, one more thing, I just missed one thing about the open air screening. For the general public, open air screenings are at 3 venues. One is the Miramar Beach, another is Anjuna GTDC parking, and third is Ravindra Bhavan, Madgaon. So kindly note that. I think that's about it. Madam, if you would like to add something. Thank you very much.
And I would like to thank the media in Panji for their unstinted support. This is the 20th year that IFFI is being celebrated in Panjim. And without your support and your cooperation, we would not have been able to have this kind of major coverage and success across all papers and channels and portals in not only Goa but all over the country. So thank you once more. And now I will just go point by point for the media regarding coverages of different verticals of the film festival. So upon your request, this year we have started 2 new initiatives. One, we held a film appreciation workshop for the local media here, and it was received very well. We had eminent teachers, professors from the Film Institute in Pune, Dr. Milind Damle and Pankaj Saxena, who interacted with you and sort of spelled out the nuances which help in reporting of the celebrated films which are showcased in the festival. And I hope all of you all have gained a lot from that. And around 15 journalists participated in the workshop. Next, as per the request received by PIB, we are also going to start issuing press releases in Konkani, because there is an increase in portals, news portals, channels which are watched and seen by the local population. So we are making arrangements for that, of the press releases to be issued in Konkani. With respect to the film bazaar, in order to create a better experience for the reporters who are interested in covering film bazaar, I request that. और अब आइए आपको ले चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं नागौर के खंडाल में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरतपुर के बाद नागौर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री यहाँ तेजाजी मंदिर पहुंचे हैं, अपने आप में काफ़ी मान्यता इस मंदिर की भी। देखिए, वीर तेजाजी राजस्थान के खास तौर से मारवाड़ के अंदर काफी मान्यता है। वो लोक देवता के तौर पर उनकी पूजा होती है और केंद्र सरकार ने वहाँ पर एक विशाल भव्य मंदिर के निर्माण के लिए वहाँ पर जो योजना है उसको भी स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जाके लोक देवता का आशीर्वाद लिया है। और अगर हम नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर इस मंदिर की और खास तौर से वीर तेजाजी की बहुत ज्यादा मान्यता है, जिन्होंने गायों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। और इस बात का यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फख्र भी है कि यहाँ पर वीर तेजाजी का मंदिर है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी ये मंदिर बहुत छोटा सा मंदिर है, एक कमरे में बना हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाया जाएगा। उसका मॉडल तैयार है और जो आउटर वॉल है वो बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, स्थानीय देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। और वीर तेजाजी जो मारवाड़ के अंदर लोक देवता है और उनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। लोक देवता का आशीर्वाद लेने के बाद वो नागौर शहर में आएंगे और यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। रैली यहाँ पर स्टेडियम में हो रही है और स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भर चुका है। मुझे भी बहुत मुश्किल, प्रेस गैलरी में भी लोग आके बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री से को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए दूर दूर से आए हैं। और नागौर के अंदर अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री का एक जबरदस्त आकर्षण है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। गौरव जी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूजा अर्चना की, पहुँचे वीर तेजाजी मंदिर में जिसकी काफ़ी मान्यता भी है, और साथ ही साथ जो वो नागौर में विजय संकल्प सभा को भी संबोधित करेंगे। खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भरतपुर में भी हमने देखा था किस तरीके से विशाल जनसमूह जो है वो उमड़ा था प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए, और अभी भी आपने बताया कुछ ऐसी स्थिति जो है वो वहाँ नज़र आ रही है। बिल्कुल गौरव, पूरी तरह से स्टेडियम खचाखच भर चुका है। ये
काफी बड़ा स्टेडियम है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आसानी से फुटबॉल मैच कराया जा सकता है, इतना बड़ा स्टेडियम है। तो पूरी तरह से ये खचाखच भर चुका है, अब भी लोगों का आना जारी है। और नागौर मारवाड़ का इलाका है, मारवाड़ अंचल में ये है। और मारवाड़ की अगर हम बात करें तो नागौर से लगता हुआ पाली और जोधपुर, तो ये जो इलाके हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। यहाँ पर अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 10 सीटों में से बीजेपी के हाथ 2 सीटें लगी थी। और जी विशाल, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं तो पहले वहां पे की जो लोक संस्कृति है या मंदिर की हम बात करें, मान्यताओं की बात करें, तो वहां जरूर पूजा अर्चना करते हैं। और वही हमने आज भी देखा जब वो वीर तेजाजी मंदिर में पहुंचे। गौरव, मैं आप लोग वही बता रहा था कि प्रधानमंत्री का अपना एक विनिंग फैक्टर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जहां पर भी जाते हैं वो अपना एक्स फैक्टर साथ लेके चलते हैं। और वहां के लोग देवी देवता होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके दर्शन जरूर करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो पिछली बार चुनाव के अंदर बीजेपी यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है इस बार बीजेपी को, उससे लगता है कि बीजेपी यहाँ जरूर अच्छा प्रदर्शन करेगी। और मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर अगर हम नागौर की बात करते हैं तो मिर्जा फैमिली बहुत नाम है उसका यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स के अंदर। और ज्योति मिर्जा जो कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर उन्होंने बीजेपी का कमल थाम लिया है और इस बार वो बीजेपी के कैंडिडेट है नागौर से। और जिस तरह से आप आवाज सुन रहे होंगे, जयकारे सुन रहे होंगे, ये सब बताता है कि लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। प्रधानमंत्री मंदिर में दर्शन करके रैली स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर हम बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो मंदिर जो है वो यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर है और लोग बहुत बेताब है प्रधानमंत्री को यहाँ पर देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। गौरव जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे विशाल, और खासतौर से जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और कुछ देर बाद जनसभा को संबोधित करने भी पहुंचेंगे, और ऐसे में जो और भी लोग हैं उनका भी आकर्षण इस मंदिर के प्रति हम मान सकते हैं। देखिए गौरव, अगर आकर्षण की बात करें तो जाहिर सी बात है आकर्षण है, लेकिन आकर्षण के अलावा इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। और नागौर से ही नहीं, नागौर के आसपास से भी, खीवसर और आसपास के जो भी इलाके हैं, यहाँ तक कि जोधपुर से भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वीर तेजाजी को प्रणाम करते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है और मोदी सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रिस्पांस किस तरह से होगा। इतना मान्यता इस मंदिर की, और वीर तेजाजी का नाम राजस्थान की लोक संस्कृति में बढ़ चढ़ कर लिया जाता है, लेकिन अब तक उनके नाम का कोई बड़ा मंदिर नहीं था। जो उनका जन्मस्थली है वहीं पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा जो कि लोक देवता वीर तेजाजी को समर्पित होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दोबारा अपडेट के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के पीपाड़ सिटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार, लूट और घोटाला होगा, वहीं जहां भाजपा होगी वहां विकास होगा। जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां लूट होगी, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घपला होगा, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घोटाला होगा, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां छलावा होगा, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां परिवारवाद होगा, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां वंशवाद होगा। ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नाम हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं विकास होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में एक के बाद एक धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। जोधपुर के ओसिया में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को 25 तारीख को जवाब देना है। अशोक गहलोत ने इसने तो वृद्धा पेंशन में भी घोटाला कर डाला, यानी वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा। बोलो, घोटाला किया कि नहीं किया?
और मालूम है कितने का किया? 450 करोड़ रुपए का। आप बताइए, अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अशोक गहलोत के परिवार ने 11,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया? भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? 25 तारीख को जवाब दोगे ना? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जालौर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है, लेकिन अपराध भ्रष्टाचार के क्षेत्र में राजस्थान आगे है। राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है, गौ तस्करी में नंबर 1 पर है और गरीबों की योजनाओं को हड़पने में भी नंबर 1 पर आ गया है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस ने सचमुच विकास कराया होता तो पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी को जितनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद और अभिनेत्री विजया शांति कांग्रेस में फिर से शामिल हो गई हैं। उन्होंने हाल ही में भाजपा से इस्तीफा दिया है। वे भारत राष्ट्र समिति से भी सांसद रह चुकी हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विजया शांति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। उन्होंने केसी राव को सबसे भ्रष्ट व्यक्ति बताया और वे कहा कि पैसा और जमीनें हड़प रहे हैं। Mr. KCR is the most corrupted person and family also. They've been grabbing the money, all the lands, everything. When BJP knows each and everything, why are they not taking action towards on KCR? वहीं दूसरी ओर तेलंगाना में मौजूदा सरकार और उसके मुखिया केसीआर ताबड़तोड़ रैलियां में व्यस्त हैं। वो लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो मौजूदा सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों दल नहीं चाहते AIMIM के नेता चुनाव न जीतें। तेलंगाना में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के नामपल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन के साथ हैदराबाद में डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हरदीप पुरी ने जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछले 2 साल में पेट्रोल पर 18 राज्यों से ज्यादा टैक्स संग्रह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि यहाँ पे पेट्रोल महंगा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार कर, राज्य सरकार राजस्थान ने इस दौरान 2021 से 22 वाला फाइनेंशियल ईयर और 2022 से 23 वाला, इस दौरान राजस्थान की सरकार ने 35,975 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया। ये जो राजस्थान का 35,975 करोड़ टैक्स है, देश के आप 18 राज्य ले लो तो राजस्थान ने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। इन 18 राज्यों का मिला के टैक्स कलेक्शन बनती है 32,594 करोड़। तो एक स्टेट 35,975 करोड़ कलेक्ट कर रहा है और बाकी 18 मिला के सिर्फ 32,000 कलेक्ट कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट के महामुकाबले की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल देखने के लिए कल अहमदाबाद जाएंगे। पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भी फाइनल मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति फाइनल देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। जो वीवीआईपी आ रहे हैं, जैसे माननीय भारत के प्रधानमंत्री, उसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ मुख्यमंत्री भी, जैसे मुख्यमंत्री असम आ रहे हैं, भारत के माननीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं, और जो बाकी और भी डिग्निटरीज हैं, सबके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। और फिलहाल मैं कह सकता हूं कि मुझे काफ़ी संतोष है कि पुलिस ने जिस हिसाब से अरेंजमेंट किए हैं। हम शाम को इसकी रिहर्सल भी करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज़ पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।